बेटा राहिम, मैं कितनी बार बताऊं, बुक नहीं है, मैं शेयर करूंगा बुक्स की पेजेस. I will share the book pages, okay? So don't you worry about those things. Let's start with the हमने नया चैप्टर स्टार्ट लेना है आज. ठीक है, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज तो हमने बहुत पहले कर लिया था. आज हमारे पास जो है नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है. एंड दैट न्यू चैप्टर इज रिगार्डिंग, न्यू चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10. और चैप्टर नंबर 10 साउंड का चैप्टर है. ओके, टॉपिक नंबर 1 इसका जो है वो है साउंड वाइब्रेशंस एंड एनर्जी ट्रांसफर. ओके, chapter 10 is regarding sound. The topic number 10.1 we are going to discuss, and 10.1 is sound vibrations and energy transfer. So let's start with the sound. Making sound. What is a sound? Sound क्या है? सबसे पहले तो इसको समझ ले कि what basically a sound is. Basically sound is a form of energy. Okay, sound क्या है? Energy है that is produced by vibrations and detected by our ears. यानी जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड दैट साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय अस. वो हमारी एयर जो है उसको डिटेक्ट करती है. सो यू कैन से द वाइब्रेशंस आर बेसिकली द सोर्स एंड आवर एयर आर बेसिकली द डिटेक्टर्स. तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस एंड डिटेक्टेड बाय आवर एयर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड. ये साउंड की definition है. Okay, sound transfer energy from a source such as drum to a detector such as or air. Like for example, we are having a drum and we are striking that drum. What is happening in that drum? The drum is vibrating. As the drum vibrates, the energy is transferred. Okay, the energy is transferred and that energy is detected by our ears. So our ears are the detectors and the drum is a source, that source which can produce a sound. Okay, so sound transfer energy from a source such as a drum to a detector such as our ears. Detector is our ear and the source is basically a drum, can be a guitar, can be a violin, can be anything that can produce a sound. So वो एक source होगा. और जो चीज हम, जैसे हमारे कान है तो हम इनको डिटेक्ट करते हैं उस साउंड को, तो हमारे कान क्या है? डिटेक्टर्स है. ओके, रिमेंबर sound needs a material or medium to travel. Okay, sound के लिए हमेशा मीडियम या मटेरियल की जरूरत होती है. Like for example, sound can travel in air, sound can travel in water, sound can travel in walls. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, वो लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है और वो गैसेस में ट्रेवल कर सकता है. सो साउंड नीड अ मीडियम. साउंड बगैर मीडियम का ट्रेवल नहीं करता. इनको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, पार्टिकल्स की जरूरत होती है, सो दैट द साउंड्स कैन बी ट्रेवल्ड अलोंग विद दोस पार्टिकल्स. उन पार्टिकल्स के साथ ट्रेवल करेगा ये. ओके, now the vibrating source produce a disturbance. As for example, we strike something. Okay, that is a source. So that source after striking produce a disturbance. That disturbance is basically the vibration. Okay, so the vibration is basically producing a disturbance in the medium, and then those disturbances can be travel to our source, that is our air. So the disturbances can travel to our air, right from a source to the detector. So when the disturbance reaches our ear, we hear the sound. So how can we hear the sound? First of all, we are going to do what? We are going to strike a source. Okay, as we strike their source, the source start vibration. As the source start vibration, it produce disturbance in that medium, and as it produce disturbance in that medium, it transfers the energy. So as the energy is transferred, the energy is reached to our ear and we can hear the sound. हम साउंड को सुन सकते हैं. ठीक है, क्लियर है बात? Any question? No sir. बहुत ही इजी है. ठीक है, we just discuss के साउंड क्या है. So sound is basically a form of energy that can be produced by vibrating objects and that can be reached to our ears, that is we can detect them. That is the simple. It means that there should be two things. One is the source where the vibrations are produced, and second is the detector which can detect the sound. So that's how we can receive the sound from any place. Okay, let's move on.
Okay, so let's continue with the making sound. Okay, we can hear sound we are when we are underwater. What does it mean? It means that, for example, we are underwater, okay, and then somebody drops a kind of, for example, a kind of stone in the water. So we heard that sound inside the water. Why do we hear the sound inside the water? Because water are particles. Water are liquid, and liquid are particles. It's the medium, and we discussed that sound can travel in a medium. So that's why we can hear the sound inside the water as well. For example, animals such as dolphin and whales, they communicate over large distances, okay, by making and hearing sounds. So whenever they want to call each other, they produce a sound, and that sound can travel with the particles. And particle ke sath move karega in the water, and it can reach to another place where they can be detected. So definitely they also have the ears, they also have the vocal cords. So when the sound is produced, that sound travel in the water. Water has the medium, that of the particles, and it can move faster in the water and go towards that part where the other animals are present who can detect their sounds. वो उनके sounds को detect कर सकते हैं. इसके कहने का मतलब ये हुआ कि sound जो है वो पानी के अंदर travel करने का मतलब ये हो गया कि sound can travel where there are particles present. So inside the water there are particles present. वाटर इज लिक्विड, लिक्विड आर पार्टिकल्स. सो पार्टिकल्स के अंदर वाटर ये साउंड जो है ट्रेवल करेगा. ये हमेशा याद रखना, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, fast in liquids, and slowest in the gases. So why they are traveling fastest in the solid? They travel fastest in the solid because solid have the particles very closely packed to one another. So the vibrations can pass on very quickly. When the particles are very close to one another, okay, the vibrations can pass on very quickly. ये आगे बहुत तेजी से जा सकते हैं. जैसे जैसे particles एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, the particles, as there are gaps present between the particles, the sound is going to be less. Okay, so solid has the fastest traveling of sound, liquid has fast, and gases has the slowest. You can say in the air the sound travels slowest. Sound जो है air में सबसे slow travel करेगा, ठीक है. सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबसे तेज ट्रेवल करेगा, और लिक्विड ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो सॉलिड से कम और गैसेस से तेज ट्रेवल करेगा. और ये याद रखना, साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर जहां पर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता उसके अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता. Okay, it means that sound cannot travel in the space. Space is a vacuum. Space क्या है? एक वैक्यूम है. तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर साउंड को, एनर्जी को कैरी करने के लिए कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होते. तो जब एनर्जी को कैरी करने के लिए कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होते हैं तो एनर्जी जो है या जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मीडियम. इसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए. अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर. नो सर. बेटा स्पेस में एज आई टोल्ड यू कि अगर आप किसी ऐसी जगह की बात करते हो जहां पर बिल्कुल पार्टिकल ही ना हो तो वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा. आप बोलोगे लेकिन आपका साउंड आगे नहीं फॉरवर्ड होगा. ठीक है, साउंड ट्रेवल वहां पर फास्ट करेगा जहां पर सॉलिड ऑब्जेक्ट हो. So when a solid object is going to vibrate, all these particles are very close to one another. So when the particles are closed, the sound can travel faster. उसमें sound क्या करेगा? Travel करेगा, fast travel करेगा. But when a particle become a particle जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो साउंड के लिए मीडियम जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने साउंड की ट्रेवलिंग जो है वो स्लो करेगी. So in air the sound will travel the slowest. Okay, and water it will move faster than the air, and in solid object it will you can say travel faster than anything. So जिनके भी पार्टिकल बहुत क्लोज होंगे वहां पर सबसे ज्यादा तेजी से वो मूव करेगा. जहां पर पार्टिकल्स हमारे पास जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे वहां पर ये बहुत तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकेगा. क्लियर? जी सर केव तो सॉलिड है तो वहाँ पे वॉइस इको क्यों होती है? क्या सॉलिड है? सर केव, गार.
इको अलग चीज है बेटा, इको इज समथिंग एल्स। वहां पर तो एक क्लोज, जहां पर एक क्लोज सरफेस होता है, एक क्लोज रूम होता है, जहां पर डिफरेंट हमारे पास जो है वो बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, तो साउंड जो है वो स्ट्राइक करता है एक बैरियर को, फिर वहां से जाते दूसरे बैरियर पे लगता है, तो ये साउंड इको होता है। बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस, द साउंड इज ट्रेवलिंग, सो एज इट ट्रेवल्स अ बैरियर कम्स, जैसे उस बैरियर पे लगता है तो वहां से वो स्ट्राइक बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है वैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। सो एज द साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक, वो दोबारा आप तक वापस आता है। इट मींस दैट वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इको प्रोड्यूस हो जाती है। सो दैट थिंग इज बेसिकली अनदर प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, और साउंड की अलग प्रॉपर्टी है। अभी फिलहाल हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम सिंपल साउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे जी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, ठीक है। सो इको इज बेसिकली काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट की रिफ्लेक्शन भी होती है और साउंड की रिफ्लेक्शन भी होती है, तो ये दोनों चीजें नॉर्मली लाइट में भी है, और ये जो है वो आपके पास जो है वो साउंड में भी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रही होती है, सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन वी हर द साउंड बैक, हमें वो बाद में वो साउंड दोबारा सुनाई देता है। डन हो गया? क्वेश्चन क्लियर है ना मेरा? बेटा अभी थोड़ा सब्र, मैं अभी तक बिल्कुल बिगिनिंग में है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, 2-3 मिनट रह गए हैं। अभी 2-3 मिनट में हम इसको नहीं कवर कर पा सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड, हम आज यही तक रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वी कैन नॉट कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक इन 2 मिनट्स। तो अगर इस वाले में किसी के कोई भी किस्म